Good morning, students. Welcome to our VVPS e-learning classes. Today, we are again going to revise rational number. We will study simplification of rational number. Let us again revise the rules for multiplication and division. First, multiplication, product of two rational numbers. The rule is to find the product, we multiply their numerators and their denominators. I will explain with help of one example. Suppose we are going to multiply minus 6 by 7 into 4 by 9. According to the rule, in the answer to the numerator, first we write down product of their numerators. So product of the numerators minus 6 and 4, that is equal to minus 24. And product of 7 and 9, that is equal to 63. Please remember the sign minus into plus, the answer will become minus. Now convert this number to its standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को करने के लिए जो भी कॉमन HCF है उससे हम कैंसिल करेंगे. So 24 and 63. We can cancel both 24 and 63 by 3. 3 8s are 24. 3 21s are 63. Further, we can't cancel because there is no common factor of 8 and 21. So the final answer is minus 8 upon 21. This is the final answer. अगर हम इस मेथड से करेंगे, there is a problem. यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, दोनों नंबर स्मॉलर था, तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ. If the numbers are bigger, then what to do? It takes a long time to do the multiplication. So for this, if possible, do the cancellation here. So the rule is you can cancel numerator to denominator, not numerator and numerator or denominator and denominator. That means we can cancel 6 and 9, 4 and 7 and so on. मगर 6 के साथ 4 को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं. So while we cancelling it, the common factor of 6 and 9, that is equal to 3. So 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2s are 6, sorry. 3 2s are 6, 3 3s are 9. Further, और कोई भी cancellation नहीं हो रहा है, then this rule, product of their numerator, the numerator is 4 and minus 2, so the product is minus 8 upon 21. तो आप किसी भी मेथड अपनाइए, द आंसर विल सेम, दैट इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 21. In my opinion, if you solve in this way, it is better for you. Now the second thing, how to divide two rational number. Division of two rational number is nothing but inverse operation of multiplication. Now what is the meaning of inverse operation? Suppose we are divide P by Q by R by S. तो क्या है रूल? तो first find the reciprocal of the second rational number, that is R by S. Find reciprocal of R by S. तो R by S का reciprocal क्या होता है? Just opposite, that is S by R. Now multiply P by Q by S by R. That means P by Q into S by R. और multiply का रूल आप पहले ही जानते हो. Again we are going to solve by another example. 2 by 3 divided by 4 by 5. तो पहले क्या करना है? Find the reciprocal of the second number. Second number is 4 by 5. The reciprocal is 5 by 4. तो first step, find the reciprocal. So the reciprocal is 5 by 4. Second step, do the multiplication. तो 2 by 3 into 5 by 4. Same rule. 2 1s are 2. 2 2s are 4. आगे और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. So the answer is 5 into 1 5 upon 3 into 2 6. तो ये सबको समझ में आ गया होगा. Let's check. We are going to simplify this two question. First question is minus 18 by 6 into minus 1 by 9. Minus 18 by 6 into minus 1 by 9. किससे कैंसिल होगा? Just now I am saying this. आप किसको कैंसिल कर सकते हो? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. 9 9 1s are 9, 9 2s are 18. अब फिर से हम
2 और 6 इसको कैंसिल कर सकते हैं बाई 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो क्या हुआ फाइनली टू द न्यूमरेटर -1 and -1, माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1 अपॉन 3 1s are 3. तो साइन का रूल क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए? When we multiply two same sign, minus into minus, the answer is plus. When we multiply minus and plus, our answer is minus. Now the second simplification, -4 divided by 3/8. तो इसके लिए क्या करेंगे? -4 into reciprocal of the second number. 3/8 is the second number, so the reciprocal is 8/3. अगर हम 4 और 8 को कैंसिल करेंगे इट इज रॉन्ग बिकॉज बोथ आर इन न्यूमरेटर. तो यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है. सो द आंसर इज -8 4s are 32 अपॉन 3. तो इन दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ टू रैशनल नंबर्स. नाउ लेट अस डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स. First word problem. From a water tank, 12 complete 1/2 liters of water is used per day. Find the amount of water used in 4 complete 1/4 days. So, amount of water used per day. एक दिन में कितना वाटर यूज हो रहा है? 12 complete 1/2 liters. 12 complete 1/2 liters. Since it is a mixed fraction, हम इसको improper fraction में change करेंगे. All of you know to convert a mixed fraction to improper fraction. जो नहीं जानते हो उसके लिए मैं बता रही हूँ. 12 into 2, 24 plus 1, 25. So 25 upon 2 liter. So amount of water used in 4 complete 1/4 days. एक दिन में 25 upon 2 liter water यूज हो रहा है. तो इतना दिन में कितना वाटर यूज होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 25 अपॉन 2 इंटू 4 कंप्लीट 1/4. दैट मीन्स 4 4s are 16 प्लस 1 17/4. यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. सो वी कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. 4 2s are 8, 25 इंटू 17 दैट इज इक्वल टू 425. तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. सो वाइल वी चेंजिंग इट द आंसर इज 53 कंप्लीट 1/8 लीटर. ये करना सबको आता है? नहीं आता है. जिनको नहीं आता है उनके लिए 425 डिवाइडेड बाई 8 इस तरह हम डिवाइड करेंगे. 8 5s are 40, 2 3s are 24, 1 53 complete. Remainder is 1/8. So this is our rough work. Now question number 2. The product of two numbers is -3/7. If one number is 5/21, find the other. Let the other number be A. दोनों नंबर का प्रोडक्ट है -3/7. One number is 5/21, second number is A. The product means multiply, that is equal to -3/7. So A is equal to, ये जो 5/21 है, when it moves to right side, it will become divide. So -3/7 divided by 5/21. और just now I am saying how to divide it. So -3/7, ये divide sign multiply हो जाएगा. Reciprocal of 5/21, that is 21 upon 5. Minus plus minus 9 upon 5. That's all for today. Thank you, class.